Hello students, how are you? It's the study time of science. So welcome in science class. Today our video is on the topic of matter, solid, liquid and gas. It means this video is again on the topic of matter. In previous video I explained you about what is matter, what are molecules, what are atoms, arrangement of molecules in different states, differences in between solid, liquid and gases, what are elements, what are compounds, etc. Now today I will explain you about properties of matter. I explained you all things, all living and non-living things are matter. Matter is found in three states: solid, liquid and gas. And they can change one form to another form. So in this video I am going to explain you about properties of a matter. First of all, I will explain you about properties of solid. Features are, according these features, I will explain you about properties of solid, liquid and gas. Definite volume, definite shape, density, melting points, intermolecular attraction, diffusion. These are the properties of matter. Solids. Solids have definite volume because molecules of solids are very closely packed. So they have great force of attraction in between them. So they do not change their volume. They have definite volume. Then definite shape. Solids have definite shape because again intermolecular space is very less in between the molecules of solids. They have great force of attraction, so they can't change their shape. They can't move or they can't change their shape until we do not apply force on them. जब तक हम उन पे कोई भारी force apply नहीं करते हैं, वो अपनी shape change नहीं करते हैं. Then density. Density of solid is higher than the liquid and gas. Melting point. Melting point of solids is higher than solid, than liquid and gases. They start melting at higher temperature. At high temperature. They require high temperature to start melting. So they have higher melting point. Intermolecular attraction. Intermolecular attraction. Intermolecular attraction in between the molecules of solid are maximum because molecules are very closely packed, so they have great force of attraction in between them. So they have maximum intermolecular attraction. Diffusion. Changing one state to another. It is very slow. Diffusion is very slow in solid. They diffuse one state to another state very slow. Flow. Solids can't flow because molecules of solids are very closely packed. They have great force of attraction, so they can't flow. Then properties of liquid.
Properties of liquid. Liquid, definite volume. Liquid have definite volume. They do not have definite shape, but they have definite volume. Then definite shape. Liquid do not have definite shape because molecules of liquid are loosely packed than the solid. So they have less force of attraction, so they can move. So molecules can move. So they do not have definite shape. They take shape according to container in which we fill them. वो जिस भी कंटेनर में हम फिल करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर लेते हैं, अपनी शेप ले लेते हैं. डेंसिटी. Density is moderate in liquid. It means less than solids but more than gases. Then melting point. Melting point also moderate. It means less than solids. Melting point is less than solid but more than gases. इनका मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड से तो कम होता है लेकिन गैसेस से ज्यादा होता है. इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन इज ऑल्सो मॉडरेट. इट मीन्स दे हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड बट दे हैव मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन द गैसेस. Diffusion. Diffusion is also moderate. They are diffuse fast than the solid, but diffusion is slow than the gases. Then flow. Solids can flow. They flow higher level to lower level. लिक्विड्स क्या करते हैं, दे फ्लो हायर लेवल टू लोअर लेवल. दे कैन फ्लो बिकॉज molecules of liquids are loosely packed, so they have less force of attraction, so they can flow, they can move. Now properties of gases. Definite volume. No, gases do not have definite volume because molecules are very loosely packed. They have very less force of attraction in between them, so they can move freely in all direction. Definite shape. No, they do not have definite shape. They take shape according to container. जैसे भी कंटेनर में हम डालते हैं उसके अकॉर्डिंग वो शेप ले लेते हैं. डेंसिटी वेरी लोअर, लो डेंसिटी बिकॉज molecules are very loosely packed. They have very less force of attraction. Then melting point. Melting point is low. They start melting at low temperature. Then intermolecular attraction is minimum. Intermolecular attraction is minimum because molecules are loosely packed, so they have very less force of attraction. Then diffusion is very fast in the gases because they have very less force of attraction, so they diffuse easily. Flow. They can flow in each direction very easily because molecules are very loosely packed. They have very less of force of attraction, so they can flow freely, easily. Now
I am going to explain you about solid and solution and mixture of liquid and liquid, etc. Solid and solutions. Molecules have certain amount of space between them. कि कोई भी स्टेट्स ऑफ मैटर के मॉलिक्यूल्स उनके बीच में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत तो क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है. दे हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस इन बिटवीन देम. दिस इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस. व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमोलिकुलर स्पेस? स्पेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, इंटरमोलिकुलर space. All states of matter have certain intermolecular space, certain amount of intermolecular space. When we add 1 spoon of salt in a water, what we observe? जब कभी हम पानी के एक गिलास में कोई एक स्पून सोल्ट की डालते हैं तो क्या होता है? We observe level of water do not increase, कि जो पानी का लेवल है वो इंक्रीज नहीं होता है. एंड सॉल्ट डिजोल्व इन दैट, और सॉल्ट उसमें डिजोल्व हो जाता है. दैट आफ्टर सम टाइम दैट इज डिसअपियर. वी कांट आइडेंटिफाई दैट वेरी सॉल्ट दैट वी एडेड. व्हाई? बिकॉज salt take space, intermolecular space of water. salt क्या कर लेता है, water का intermolecular space ले लेता है. so level of water remains same. water का level क्या होता है, same रहता है, because salt take space, intermolecular space of water. And the mixture of salt and water is called salt solution. और जो मिक्स होने पे जो सॉल्यूशन मिलता है उसको हम, जो मिक्सचर मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन. द लिक्विड इन विच ए सॉलिड डिजोल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट. वो लिक्विड जिसमें कि हम सॉलिड डिजोल्व करने जा रहे हैं. इट मीन्स हमारे एक हाथ में एक ग्लास पानी का है, दूसरे में 1 टेबल स्पून सॉल्ट की है. इट मीन्स तो लिक्विड इज नोन एज सॉल्वेंट एंड सॉलिड नोन एज सोल्यूट. अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. द लिक्विड इन विच ए सॉलिड डिजोल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट. वो लिक्विड जिसमें कि वो सॉलिड हम ऐड कर रहे हैं वो डिजोल्व होता है, तो उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट. What is that? Solvent. And the solid which dissolve in the liquid is called solute. और जो हम solid dissolve करने जा रहे हैं उसमें लिक्विड में ऐड करने जा रहे हैं, that is known as solute. And mixture of solute and solvent is known as solution. और जो मिक्सचर बनता है solute and solvent का, होमोजीनस मिक्सचर, इट मीन्स दैट वी कांट सेपरेट, जिसको कि हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं उस सॉल्यूशन को. सोल्यूट और सॉल्वेंट के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सॉरी मिक्सचर को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन. इट मीन्स व्हाट इज सॉल्यूशन? व्हाट इज सॉल्यूशन? ए होमोजीनस मिक्सचर ऑफ ए सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन. सोल्यूट का होमोजीनस मिक्सचर सॉल्वेंट के अंदर क्या कहलाता है, सॉल्यूशन. वंस अगेन, ए होमोजीनस मिक्सचर ऑफ ए सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. दिस वे वी कैन गेट sugar solution. When we add sugar in water, we found sugar solution. Then some liquids like milk, glycerin, lemon juice also dissolve in water. जैसे हमने अभी सॉलिड डिजोल्व किया, वैसे ही कुछ लिक्विड्स हैं वो भी क्या हैं, वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं. दे कैन बी डिजोल्व इन वाटर. द लिक्विड्स दैट मिक्स विद
ईच अदर आर कोल्ड मिसेबल लिक्विड्स। वो लिक्विड्स जो कि एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल देम, मिसेबल लिक्विड्स। इट मीन्स वाटर एंड मिल्क, दीज बोथ आर मिसेबल लिक्विड्स। हम जब वाटर में मिल्क ऐड करते हैं तो दोनों मिक्स हो जाते हैं। लिक्विड्स लाइक oil and kerosene that do not dissolve in water are called immiscible liquids। लेकिन कभी हम वाटर में ऑयल ऐड करते हैं तो वो उसमें डिजोल्व नहीं होता, उसमें मिक्स नहीं होता, that liquids are known as immiscible liquid। It means for a milk and water is miscible liquids, both are miscible liquids, but water and oil both are immiscible liquids। Some gases like oxygen, carbon dioxide and nitrogen can dissolve in water। Aquatic animals breathe in oxygen, dissolve in water। Some gases can dissolve in water, not all gases can dissolve in water, and that dissolved gases are used by animals and plants that live in water। जो कि पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा क्या की जाती है, यूज में ली जाती है। सम गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वी यूज इन ड्रिंक टू मेक इट फिज सॉफ्ट। उसको सॉफ्ट ड्रिंक्स में हम फिजी उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, गैसेस आप क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ड्रिंक्स में हम डिजोल्व करते हैं जो उसको फिजी बना देती है। When we boil water, small bubbles of air are seen on the inner side of the container। जब कभी हम वाटर को बॉईल करते हैं तो बबल निकलने लगते हैं उसके अंदर से। These bubbles are of dissolved gases that separate from water on heating। It means that is showing some gases are dissolved in them and that are getting separating when we boil them। Thank you. Have a nice day.